होता है वो जब भी बैठता है, when the patient is coming, we start seeing right from the walking style to the sitting style to the talking style to कि आप कितना फास्ट बोलते हो या फिर आप कितना फास्ट चलते हो या कितने धीरे से या फिर फास्ट विचार करते हो, उस सबसे we will come to know how your prakriti is even before touching you to understand about your pulse or to understand about your bodily components. So पहले तो that is how वी कम टू नो। आयुर्वेद में 3 परीक्षा बताई गई है। एक दर्शन, दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न ही त्रिविधा परीक्षा। सो दर्शन से पहले देख के, स्पर्शन यानी नेक्स्ट इज बाय टच एंड दर्शन स्पर्शन एंड देन यू गो अंडर प्रश्न कि हमारे जो क्वेश्चनर्स होते हैं कि आपको पता चलेगा आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जो तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। So all of those questions have specific answers, and depending on what choice you make, you know about your Prakriti. Let us go with the first slide today of how Vata Prakriti normal is to understand the gunas. Can we have the first slide over here? जो वात दोषा होता है उसके पीछे to understand what Vata is, perfect. Thank you so much for the slide. If you see in the slide, there are 2 components. एक की जो nervous system होता है, that is where your vata will reside. And second is your glands या फिर endocrine system जो हम hormonal system बोलते हैं. That is where the vata is going to function. So what is vata in your body? It is your nervous system, central nervous system, and second, it is the endocrine system where all of your glands are connected with one another. इसका मतलब ये है कि when you start, right from the time you start breathing and your responses to any stimuli is controlled by vata, and also all of your hormones as in how it develop throughout during your age are again under the control of your vata dosha. Next slide here. Once you understand that the governing 2 systems in our body are under the influence of vata, let us understand by the next slide what the responsibilities of this energy is. How can we decide if it is optimal or how can we decide if it is deranged? Next slide, Azharji. So we will be understanding depending on the responsibility of what it does, right? So vata is responsible for movement. So आप जब चलते हो, फिरते हो, बैठते हो, उठते हो, that. Second is not just skeletal movement but your peristaltic movement कि आपका digestion कैसा है, how are your intestines working properly, are they absorbing the water, are they creating the right kind of stools. Then the third responsibility here is pumping action of the heart. So if your heart is going to pump very nicely, then definitely your vata is working well. Next is breathing of the lungs. So आप जब सांस अच्छे ले रहे हो, that is also the functioning of vata. And then all the muscles and joint movements of your body along with all the transporting systems is taken care by vata. You can understand that by understanding कि अगर 3 फ्रेंड्स जा रहे हैं एक गाड़ी में, तो जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है वो है वाता दोषा। जो ड्राइवर्स लाइसेंस लेकर गाड़ी चला रहा है बाकी 2 पैसेंजर्स को लेके जो पित्त और कफ है, तो द वन विद द ड्राइविंग लाइसेंस इज कॉल्ड एज अ वाता दोषा. सो वंस वी अंडरस्टैंड ओके ये सिस्टम्स में वाता दोष रहता है, then we can also understand what it along with physical attributes, what mental attributes can vata talk about. So vata talks about, we'll go to the next slide. It talks about your power of creativity or imagination. आप imaginative अगर बहुत हो, आप intuitive बहुत हो, आप resilient हो, यानी कि you are when you are you decide कि okay you want this and you are firm on that decision, then but at the same time you are sensitive, you are emotionally sensitive, you are physically sensitive, okay, you are spontaneous. बहुत लोग ऐसे होता है कि spontaneous planning बताते हैं या फिर बनाते हैं, and that spontaneity actually works very well for them rather than pre-planning it for a very big times. You might understand some of your friends are very spontaneous.
So that is the functioning of vata in them. But at the same time, these people might also be a little bit indecisive. कि आपको अगर ऐसे लगता है कि you know मैं ये करूँ या वो करूँ या वो करूँ, तीन decisions है and you're not able to place your finger on A, B or C, then that means your vata is a little bit out of balance and you need to balance that by having more resilience, by having more stability in your functioning. So we are slowly going towards personality types. Agar if you are able to understand and relate to any of these functions, then you are moving towards more of Vata Prakriti person. If you are very imaginative, for example, artists, they need to be of Vata Prakriti. If you have more Vata in you, you can be a great artist. If you are of Vata Prakriti, you can be a great dancer. You know, because you have the creativity, you have the imagination, you have the movement very well in you. You are artistic. So people who are more towards, I think, arts or people who are more creative are more having going towards the Vata side of their personality. Now let us understand, along with the responsibilities of Vata in mind, let's go to the next slide here and let us understand what it does mentally if it is imbalanced. One is it will exhilarate you. So जो लोग बहुत जल्दी एक्साइट हो जाते हैं कि आप बता रहे चलो पूना का प्लान करते हैं, they just like, oh yes, let's go next weekend. You know, this is spontaneous planning and that's also, it also excites them. At the same time, sometimes we understand that there is a response, we give more out of the stimulus, so that response is fast responding. यानी अगर कोई आप न्यूज़ सुनो और आपको बहुत धक्का लग जाता है and you're screaming or you are afraid or you are panicking, then the people who panic more usually have tendency towards going towards vata body type. There is fear, insecurity and doubt. So you know, though these people will be very great detectives, you're natural detectives by nature. So when you are more having any insecurity or doubt and you are going to analyze, over analyzation में जाता है, overthinking में होता है, so that is also responsibility of vata dosha. I'm not saying that these are any bad. When you anything out of proportion goes into imbalance, anything within proportion which helps you grow is again of balance. Fear is important so that you outgrow the feeling of fear to grow into a better person than you were before. But if fear is the one that is trapping you and that is not letting you move forward, then the vata is out of balance and you need to treat this imbalanced vata. Insecurity again. The reason behind insecurity is your own mind playing games with you. So if you're able to control that and address the issue and not discard that, then the vata will be balanced and you will be able to move with grace in your life. So these are some of the factors where mentally you will understand that, hey, मेरा वात दोष बढ़ गया है, या फिर I'm more of vata body type. Okay, next coming to why this happens. Now there is always a reason why. Ayurveda is very logical by that sense. है ना शरद जी, हम उस दिन बात कर रहे थे कि you know there's always a logic behind. There's no science that explains logic so well than Ayurvedic science is what I believe. कि हर एक के पीछे क्यों होता है और क्यों के आंसर्स होते हैं. कभी ऐसे नहीं होगा नहीं बस आप ये खा लो या बस आप ये कर लो. There's always a reason. तो डॉक्टर देविका, ये बहुत बढ़िया बात आपने बताई कि देर इज अ लॉजिक बिहाइंड एवरीथिंग। और आपने एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग जो बात कही थी कि सेलिब्रिटीज की, आर्टिस्ट की आपने बात की थी। तो Yes. आप तो इतना बढ़िया क्लिनिक बॉम्बे में चलाते हैं, तो कोई ना कोई सेलिब्रिटीज के साथ तो आपका पड़ा होगा वास्ता। और उनको देख के आपको क्या लगा होगा? थोड़ा सा मुझे लगता है ऐसे कि ये बहुत रुचिकर हो सकता है, इंटरेस्टिंग हो सकता है हमारे ऑडियंस के लिए। if you would like to share something, or maybe from all around personalities that you see in sports and Bollywood के शहर में तो आप रहते हैं। Gee, yes, yes. So we are fortunate to be living in a city of Mumbai where connectivity is very easy. Everything is very approachable. And agar kahe to we have the beach close by, and kahe to we have the hills and greenery close by. So yes, I had a very nice interaction with Deepika Padukone and Ranveer I think Kapoor. I have the two with me.
Oh yeah, yeah. Not with Messi though, but yes, with Deepika Okay. Padukone. Okay. Definitely. So these are an ideal and a perfect examples of Vata being highlighted in them, and they're balancing it very well. You know, Mhm. Vata Prakruti is when you see a person who is, if you go to a show or you're in a party, this person will enter in and they will be the one introducing themselves. They'll be the one wanting to be, part of every discussion or the group, and they'll be very active. They'll be usually the ones having a drink in their hand, a cold drink or warm drink or something to drink, you know. And they'll be the ones who are very easily approachable, who will have good eye contact, who will not shy away, and they will have their own personality being set. They're very active, proactive, they talk a lot, they try to convey things in ways that you will understand, and they want to be not missed out anywhere. So they will make their presence everywhere they go. So the two of the best example are, like I said, both of them are artists in their own way. One is in sports, Messi, if you know, and one is Deepika Padukone. Was a very easy example to understand. Tall, very difficult to put on weight, easy to lose weight. So, these are the type of personalities that we can relate to when you think of a Vata personality. It was Deepika Padukone's birthday, 2021 May, 6th of Jan. And she had come with Ranveer Singh to take an Ayurvedic therapy in the clinic. That time, हमारा इतना बड़ा clinic नहीं था, छोटा था. And she was so humble when I asked her why, how come, it was just post-COVID in 2020, we had hit COVID. And Okay. she very gently said that because it belongs to a family, I thought I should come, not go in a chain, but rather go to Vaidyas, जिनके फैमिली में आयुर्वेद प्रैक्टिस होता है और जो मुंबई में है, अप्रोचेबल है. Okay. And we had a very beautiful discussion. So I thought, yeah, why not share that incidents with you? We have many celebrities coming in, going out, but again, for a doctor, guest or a patient is a patient, irrespective Mhm. of their, what professionally they are doing. Okay. Yes. So I'm going to show another image, and you got to tell me with that because you made it really exciting. So, I'm actually, little infused and induced to show this. That's a perfect Vata body type. Absolutely. Charlie Chaplin has been like he's immortal Vata body type, I feel, कि सदियों से हम देखते आए हैं, and any generation, every generation is going to be entertained. So they're Mhm. great entertainers. They're great entertainers. Thank you so much for showing the image, Saraji. If you think of Vata body type, it is Charlie Chaplin. Perfect, perfect. And then he has, because of the accelerations in his images, it makes it even Mhm. more funny. The So, spontaneity that he brings in any act that he does. absolutely. And if you read the autobiography of Charlie Chaplin, the majority of his scripts were never been written. They were all very spontaneous. So, a Mhm. perfect example of Vata body type is Charlie Chaplin. Again, when imbalanced, it can have, you can also call it as, monkey mind, or a mind Okay. that attaches itself to many branches of the tree at the same time. Mhm. So if you are having that, oh, I am monkey mind, or I'm thinking so many thoughts at once, then definitely your vata is increased and out of balance, and you need to balance that by doing eating the right foods, doing the right exercises, having more of mental calmness, and also Mhm. balancing by panchakarma therapies. So this is getting all really exciting. Now, होता ये है ना कि आपने हल्की सी कुछ हिंट दिया और फिर वो खुलने लग जाता है सब कुछ. तो थोड़ा सा जी, और बताएंगे पर्सनालिटी जी। ट्रेट्स के बारे में. Sure, sure. So, या. a typical Vata personality will have gunas like Tatra, Ruksha, Laghu, Shita, Khara, Sukshmasho, Anilaha. ऐसे बोलते हैं, where Tatra Ruksha, यानी they usually have dry skin. You have more dryness in your body as well. You might feel thirsty more, at intervals of time. Or you usually complain of drier skin. When you say skin, also the hair is rough and dry. ब्रिटल भी होते हैं, थिनिंग थोड़े होते हैं हेयर की, बहुत थिक हेयर नहीं होते. ओके. दे आर लाइट वेट. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? आप अगर चार्ली चैपलिन को चलते देखोगे, यू विल सी दैट ही इज वॉकिंग ऑन एयर.
Yes. So you feel as if you're walking on air. Some people have that sprint when they walk. Mm-hmm. That natural sprint. आप अमिताभ बच्चन जी की भी walk देखो. He has Mm-hmm. that natural sprint in the, beautiful. So that is a type of vata body type. Okay. तत्र रुक्ष लघु शीत. These body types usually, अगर आप में से कोई you are feeling cold, you can't tolerate more AC, या फिर आप थिएटर में जाके अपने आप को कंबल में ओढ़ के बैठ जाते हो, या फिर you need a jacket whenever you go out, or your hands and feet fall cold, then definitely it is a vata body type that you are having. या फिर कुछ लोग रुक्ष तत्र अनिल, that means you can feel more gases or bloating easily because of certain foods that you have. So you are very sensitive towards certain foods, कि नहीं मुझे पनीर खाने से गैसेस हो जाते हैं, या फिर मुझे रात को लेट खाने से पोटैटोज sometimes give as acidity or gases to the people. So that is one among the characteristic features of air and space elements coming together. So if you can understand, there are 5 elements हमारे जो surroundings में होते हैं. So उसमें से the air element and the space element, when together they are combined and more in our body, then Mm-hmm. you are more of a vata body type. And because they are more in our body, you will also feel that it's very easy for you to feel lightheaded, to Mm-hmm. feel that मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है, मैं जरा बैठ जाता हूँ, आई एम नॉट एबल टू ऑल्सो अंडरस्टैंड सर्टेन थिंग्स इमीडिएटली. अगर समझ में ही लिया तो सिंक इन होने में उन लोगों को थोड़ा देर लगता है, दे डोंट सिंक इन वेरी वेल. So because of the air and space elements more, so how do you balance that? By giving the earth and the water elements to them. So these Okay. people are the ones who need more Ayurvedic care than the Pitta or Kapha body types. वाह, वाह, Hmm. वाह. Hmm. Hmm. सो जैसे आपने बताया कि एयर इन स्पेस एलिमेंट, और हम समझते हैं, Hmm. जितना मैंने योग में कुछ बातें समझ आई मुझे, जैसे कि ईयर्स आर कनेक्टेड टू Yes. द स्पेस एलिमेंट, से फॉर एग्जांपल आईज आर कनेक्टेड टू द फायर एलिमेंट. इस Yes. तरीके से अलग अलग हमने बातें सुनी हैं. Hmm. द टेस्ट इज कनेक्टेड टू द अर्थ एलिमेंट, हमने इस Yes. तरीके का ये सब चीजें हमने समझी हैं. Hmm. तो कुछ ऐसा भी है कि जैसे फॉर एग्जांपल कुछ सर्टेन बॉडी पार्ट्स जो हैं वो एप्रोप्रिएट लोकेशन है टू सजेस्ट दैट इट इज वाता विच इज द गवर्निंग एलिमेंट देयर. जी, जी. सो जैसे बोलते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश बोलती हूँ मैं, वाता यस. पित्त कफ को. वाता इज द ब्रह्मा, सो इट इज ओके. द क्रिएटर. ओके. तो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी स्थान होते हैं, वैसे ही ओके. हमारे बॉडी में वात पित्त और कफ के अपने अपने स्थान होते हैं. ओके. तो वो स्थानिक वहां बैठते हैं पर सभी जगह संचलन करके आते हैं. ओके. So Vatasthana is mainly your pelvis, yeah, below the umbilicus. So the ओके. primary locations of Vata here are the colon, anything below the level of your navel. हम्म. Okay, आप अगर देखोगे कि colon यानी कि large intestines mainly, हम्म. the thighs, जंघा जिनको हम बोलते हैं, हम्म. hips, हम्म. okay, bones, the ears. Again, bones when I say, not just below the umbilicus, but bony structure of the entire our body. Ears, why? Because like you right now mentioned कि earth and space element है. So the sound waves travel even through the space, right? So we are able to listen through the air and the space, and so the ears, uh, and also the organs of touch, that means the skin. तो जिनको स्किन सेंसिटिविटी होती है, या फिर ड्राइनेस होता है, या सेंसलेसनेस होता है, कभी कभी ऐसे होता है कि इफ यू सी इन वुमेन आफ्टर सर्जरी, और इवन इन मेन आफ्टर एनी सर्जरी, वो जो सर्जिकल पार्ट होता है वहां पे डिसेंसिटाइजेशन होता है, यू कैन नॉट फील दैट स्किन, राइट? दैट इज बिकॉज ऑफ द नर्व एंडिंग्स टेम्परली बीइंग ब्रोकन. But if you then balance that vata by decreasing the amount of excess vata in you, the sensitization comes back. So you can sense that tactile function जिसे बोलता है, you can have the sensations back. तो the sthan of vata है below the umbilicus, and that is why in Ayurveda we have many colon therapies.
where the colon is nourished as well as the colon is cleansed. It's not called as colon cleansing, because we are not just cleansing things, but we are also healing and nourishing the colon. जो हम्म कि यूजुअली जो केयर टेकर होता है इस उसकी केयर नहीं ली जाती. वैसे ही हम कोलोन इज आवर केयर टेकर. इट फॉर्म्स द वेस्टेज, इट फॉर्म्स द स्टूल्स. But to take care of that colon, we have Basti and other therapies which हम्म actually lubricate the colon from inside, and then uh, it works on people who have constipation या फिर irritable bowel syndrome, ऐसी जो colon से related any जिनको disorders होते हैं, we go with those line of treatments. Also for imbalance of vata, can also call vertigo, या फिर imbalance issues, या people balancing नहीं होता in the ears. So we have ear therapies like Karnapuran, where oil is instilled in the ears so that the nerve endings शांत हो जाती है. Now these are all irritabilities because of which the vata is not functioning properly. तो Uh, आपने जैसे पिछले सेशन में बताया था कि अलग अलग फैक्टर्स हैं जो कि वात प्रकृति को इन्फ्लुएंस करते हैं, और किसी भी जी, प्रकृति को इन्फ्लुएंस करते हैं, आपने कहा था। जी, और बातचीत हुई थी कि उम्र का भी प्रभाव पड़ता है, मौसम का भी प्रभाव पड़ता है। जी. तो इन सब चीजों के बारे में आपने बातचीत की थी। तो थोड़ा सा बात के बारे में बताएंगे कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उसमें। सबसे important factor that influences vata and shoots it up is mental or physical stress. ओके। That is a first and foremost factor. Now, that ओके। stress can be acute stress or chronic stress. ओके। Okay, that's the first factor. कि आपको अभी पता चला कि कल मेरी एग्जाम है. That's an acute stress. Okay? या फिर आपको पता चला कि मुझे ये सर्जरी करवानी पड़ेगी. That's a chronic stress. ओके। Okay? Stress is the immediate factor जिससे हम वात बढ़ सकता है. Other factors I have written over here, I'll touch base with them. But I also want to give you a key. क्या है, हम ये जब webinar कर रहे हैं, I'm also going to try to give you certain keys that are in your own hands to take the stress down. Yesterday I had a patient and she was like, just tell me how do I manage as soon as I become anxious. A typical patient of anxiety, you know. I said, you know what? One, keep your hand on your chest once and the second hand on your belly. If you're in the webinar, you can do this with me and you will immediately feel the change. One hand on the chest, one hand on the belly. And imagine that your chest, lungs don't exist. For once, just imagine that. And there is a bag inside your stomach which you need to fill with air जब आप breathe in करते हो. So breathe in through the nose and fill that bag in your tummy. That means distend your tummy. आप अपने tummy को distend करेंगे. And when you breathe out, आप उस tummy को pull in करोगे manually, or by pulling in the muscles of the stomach. So you're exhaling out. So breathe in, tummy out, and breathe out, tummy in. Okay, breathe in with me, tummy out, breathe out, tummy in. Breathe in, tummy out, breathe out, tummy in. This kind of breathing is called as diaphragmatic breathing or belly breathing in layman's terms. This immediately takes your palpitations down. It immediately takes the stress hormones, cortisol, brings it down and brings it under your control, in the control of your thalamus, your thyroid. Okay. So हाँ। once you are in your control is when you feel the anxiety going down. It takes about 6 seconds for this breath. But if you practice this 6-second breath, you are immediately able to hijack your hypothalamus, your amygdala, जिसे बोलते हैं. It's a center of your brain which causes stress. You are able to take that down and have it under control. So the first trigger of vata can be controlled by breathing. The second influencing factor is old age. Again, just as we age, there are degradations going on in the body. There is more degeneration than regeneration, right? तो नर्व्स ने जिन्हें हमें साथ दिया है, अब वो बोलते हैं कि आप हमारा साथ दो. ऐसे करके after 45 years of age in females, when estrogen progesterone are missing, hormones are missing, and after 45 also in males when they attain andropause, is when naturally vata is going to increase.
आपकी कोई भी प्रकृति हो, फिर भी आपको नैसर्गिक रीत्या वात के डिसऑर्डर्स होंगे। तो अगर आपको पता नहीं है कौन सी ट्रीटमेंट लेनी है, क्या लेनी है, बट वात कंट्रोलिंग ट्रीटमेंट्स आप अगर 45-50 के बाद लो, तो आपके कोई भी प्रॉब्लम जैसे कि जॉइंट एक हो, मसल एक हो, दैट विल कम अंडर कंट्रोल। इवनिंग टाइम्स ऑफ द डे अगेन आर द फैक्टर्स दैट बाय नेचुरली वाता इंक्रीजेस, तो आपको बाहर जाने का मन कर रहा होगा, right? Then next are fried, dried, frozen foods. They increase your vata. So जिनको जलेबी, पकोड़े, हाँ, या फिर आइसक्रीम्स खाने की बहुत आदत है, for them your vata is going to definitely shoot up. You are going to add to the vata disorders. Exercise. Now I want the camera to you can shift the camera to me because I'm going to show you certain exercises. वन इज आप जिम जाते हो, वेरी गुड, लेट इट बी रेगुलर, या फिर आप कोई एक्सरसाइज करते हो, लेट इट बी रेगुलर, पर आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज माय एक्सेस एंड व्हाट इज माय बेसिक्स. If you stick on to the basics for a longer period of time, you will have a healthy and long life without much of disorders. आयुर्वेद में अर्ध शक्ति व्यायाम बोला है. ओके, मीनिंग ऑफ दैट इज आपकी शक्ति आपको पता होना चाहिए कि मेरी आधी शक्ति इसमें चली गई है, इनफ, यू शुड स्टॉप. बहुत लोग बॉडी बिल्डर्स या फिर बॉडी बिल्डिंग के लिए ज्यादा प्रोटीन खा के 2-2 घंटे, 4-4 घंटे व्यायाम करते हैं. दैट इज गोइंग टू गिव यू इमीडिएट रिजल्ट्स, बट इन अ लॉन्ग रन इट्स गोइंग टू debilitate you. So excess exercise is not at all recommended to you because you are actually causing more wear and tear. You should need to balance that exercise and rest very nicely. So 3 times a week exercise is more than enough for a Vata Prakriti person. 2 times a week or 3 times a week. You do not need to go for 5 times or 6 times a week ka exercise. That is more of kapha dominating personality pe jata hai wo. Pitta needs to be 3 or 4 times a week, enough. If a Vata Prakriti person does 2 or 3 times se zyada exercise in a week, his Vata is going to shoot up and he's going to be feeling very fatigued, like you saw in that picture. इंटरेस्टिंग, दैट्स रियली इंटरेस्टिंग. Hmm. अक्सर ये होता है कि लोग योगा कर रहे हैं या कोई भी किसी भी टाइप का एक्सरसाइज कर रहे हैं, एरोबिक्स कर रहे हैं. मैनी पीपल स्पेंड लॉट ऑफ टाइम ऑन द फील्ड्स. Hmm. और हम कई बार जैसे हिली एरिया में जाते हैं, चढ़ाई करते हैं, माता वैष्णो देवी मंदिर जाते हैं, तो Hmm. अक्सर ये चीज हम सुनते हैं कि जी वाता एग्रीवेट हो गया है. जी, जी, यस. जी. यस, सो यस. एंड ओके. अगेन द क्लाइमेट टू. अगर कोल्ड क्लाइमेट में हो आप, ओके. then it is your vata is already going to increase. So what you need to do, अगर cold है तो keep yourself warm, you know, हम्म. have more liquefying, good in proportion ghee and oil. You should not have more dry foods because climate is dry and cold. हम्म. Right? So cold seasons and are also going to aggravate your vata. So हम्म. always go parallelly with the seasons. If it's going to be cold outside, you are going to be cold inside. So हम्म. आप हिली एरिया में हो या फिर योर विंडी एरिया में हो, जैसे कि आप बीच पे हो, सो हम्म. यू नीड टू टेक केयर ऑफ द ईयर्स बिकॉज अगर बात उसमें चला जाता है, द विंड इन योर ईयर्स हम्म. डू कॉज irregularities once you come back, ringing of the ears होते हैं, ओके. all of that, yeah. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हुआ बात. आपने तो फिजिकल लेवल पे बताया कि क्या क्या इम्पैक्ट आ सकते हैं. मेंटल इम्बैलेंस के भी कुछ फैक्टर्स हैं वाता की जी. वजह से व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ वाता इम्बैलेंस एट मेंटल लेवल, At इमोशनल mental लेवल? level, vata imbalances causes a lot of worry. ओके. Vata imbalances cause a lot of overthinking, ओके. you know. And I always say, जैसे कि टीवी की एंटेना होती है, वैसे हम्म. ही हमारे विचारों की एंटेनास हमारे हेयर है. So it causes a lot of receding hairlines or a graying of hair, हम्म. roughness of hair, dryness of hair, hair fall, हम्म. because you're not thinking right and your antennas are also like fired up all over the place, हम्म. right? So your always mental attributes are going to show up on your physical components. So over stressing, overthinking, and also over worrying हम्म. is going to cause the vata to increase. ओके. Another thing is the inability to let go.
और द एबिलिटी टू जस्ट होल्ड ऑन एंड गो इन पास्ट. बहुत लोग ऐसे होते हैं कि फीडबैक पास्ट के इसमें ही रहते हैं, वो रिकैप में ही रहते हैं, हम्म प्रेजेंट में नहीं रहते. हम्म यू नो योर पास्ट में रहते हैं. और कुछ पर्सनालिटी टाइप्स ऐसी होती है जो आगे का बहुत ज्यादा सोचती है. फियर एंड एंजाइटी कम्स व्हेन यू आर थिंकिंग टू मच अबाउट द फ्यूचर देन हम्म थिंकिंग अबाउट द नेक्स्ट, next plan. So to bring that, the Vata people, or the mantra that I would suggest for any Vata type person is to slow down and be present. If you keep saying that to yourself, slow down and be present. So hold yourself to the present moment and just slow down. That is going to help them bring their own Vata, which is out of control, in their control. हम्म। क्या अक्सर अलग अलग प्रकृति में अलग अलग एक जैसे स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम होता है बॉडी Hmm. का। तो Hmm. जैसे कहते हैं कि कुछ लोगों को जब बहुत ज्यादा तनाव में होते हैं तो Hmm. उनको भूख लगनी बंद हो जाती है। Hmm. तो ये किस तरीके की प्रकृति का सूचक है ये? भूख बंद हो जाना इज डेफिनेटली वाता शटिंग थिंग्स डाउन. ओके। यस. बिकॉज लाइक आई सेड, ड्राइवर्स लाइसेंस सिर्फ वाता के पास है. तो जो भी चालू करना बंद करना, एटलीस्ट चालू करना या ओके। फिर उसको ऑफ करना, ऑन एंड ऑफ का इग्निशन प्लग वाता के हाथ में है. ओके। तो अगेन, एनी न्यूज या फिर कुछ अच्छा ना लगना और भूख चली जाना हम्म इज मेनली बिकॉज ऑफ वाता. बट देन हम्म उसको भूख वापस लाने के लिए क्या करना इज द अदर दोषास लाइक पित्त एंड कफ आल्सो हेल्प टू ब्रिंग इट बैक टू न्यूट्रल सी. ओके। बट इसीलिए वाता के टाइप अगर आप देखो, कभी कभी उनको बहुत प्यास लगती है, कभी नहीं लगती. प्यास नहीं लगती, कि कभी नहीं, कभी कभी पी लेता हूँ पानी, कभी नहीं पीता हूँ, याद नहीं रहता. नाउ हम्म दैट ऑल्सो हैपेंस बिकॉज ऑफ द स्टिमुलस ऑफ द सराउंडिंग्स टू दैट पर्सन. तो ओके। स्पेशली भूख, अगर आप देखो, हंगर, वात बॉडी टाइप्स विल हैव वेरिएबल हंगर. कभी कभी चटपटा खाने का मन करता है, तो कभी एक ही मील में ठीक है, कभी कभी नहीं नहीं मुझे तो कुछ नमकीन चाहिए, मैं इसी पे एवरी. आने वाला था, ये मेरा अगला प्रश्न था एक्चुअली में। पर या. उससे मैं जाऊं इस पे थोड़ा सा और रोशनी डालते, पर उससे एक जो प्रश्न जो मन में आ रहा है वो ये है कि जैसे आपने अलग अलग फैक्टर्स जो आपने बताए कि अलग अलग तरीके से तनाव का प्रभाव पड़ता है, रेस्टलेसनेस आपने बताया, एंजाइटी का आपने बताया, जी. इन वजहों से तो नींद जाती है, हम मान के चलते हैं। पर हाँ. क्या सीधे सीधे भी कुछ बात का प्रभाव नींद पर पड़ता है क्या? नींद पे सबसे ज्यादा प्रभाव सेल्फ टॉक का पड़ता है. ओके। द वे यू टॉक टू योर सेल्फ ओके। एक्चुअली अफेक्ट्स योर स्लीप. ओके। बहुत लोगों को ये लगता है कि दूसरे में से जैसे बात करते हैं उसके वजह से मेरी नींद चली गई है, हम्म या फिर मुझे जो इंसल्ट या फिर एम्बैरेसमेंट हुई, हम्म उससे मेरी नींद चली गई है. इंसोम्निया इज बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स हैपनिंग, बट नो, हम्म इट इज योर सेल्फ टॉक that affects your mind and the sleep a lot. So Vata Prakriti person to definitely need to meditate and have a positive reflective self-talk, looking into the mirror if possible at night before sleep. वाह। Positive, yeah, yeah, yeah. And I tell that to many of my patients, and that has incredibly increased a lot of sleep routines for the patients that I have. हम्म कि सोने से पहले आप 5 चीजें अपने बारे में अच्छा बोल के सामने अपने मिरर में बोल के सेल्फ टॉक करो, यू विल हैव अ बेटर क्वालिटी ऑफ स्लीप. हम्म So no, those factors are very important, along with of course other ayurvedic herbs that you might need. Sometimes ashwagandha is important. Magnesium कुछ लोग लेते हैं. Sometimes जटा मामसी जैसे herbs लेते हैं. To vetiver करके है. So we have many herbs, but the most important thing is calming your mind. The monkey mind needs to go to rest before you sleep. So आपने आपको अगर पता होगा मेडिटेशन के टेक्निक्स होते हैं कि त्राटक जिसे बोलते हैं, focusing, यस concentrating on a flame of light or on an object, यस that यस। channelizes your vata and it actually brings it down to zero and you can have a restful sleep. ओके। That's one of the good solutions a vata prakriti person can have before sleep. दैट्स वंडरफुल। सो Hmm. अब इसी चीज को आगे लेते हैं, हम बात करते हैं जो खाने पीने की बात होने वाली थी। जी, जी, जी. तो Yeah. सबको बहुत इस चीज में रुचि रहती है
कि खाने पीने का देखो, तो पूरा भारत शौकीन है। और किसी भी अलग अलग कोने में चले जाएं भारत के, तो अलग अलग चीजें हैं, डिशेस हैं। और हम दूसरी जगह जाते हैं तो शौक से ढूंढते हैं कि यहाँ का स्पेशल क्या है। तो बात करते हैं, तो वात प्रकृति के लोगों को कैसा खाना पसंद है? So a typical Vata Prakriti person will love namkeen. They will love the salty taste. कुछ तो ओके। नमकीन चाहिए मुझे, चाय के साथ हो या नाश्ते के साथ हो। ओके। this this is a typical Vata characteristic. नहीं, मुझे ओके। कुछ खाना कितना भी टेस्टी हो, पर मुझे वो अचार चाहिए जिसमें ओके। वो I see many nods. I love it when you keep the videos open though your audios are closed. I love to see the nods. So it's like कुछ तो चाहिए जिसमें टेस्ट मेरा घर का बना अचार या फिर नींबू का अचार. So they love the sweet, sour and salty taste. Salty जितने भी being शौकीन यहाँ पर बैठे हैं वो कम से कम रिएक्शंस तो जरूर दें, कमेंट्स डालें। और definitely कुछ प्रश्न हो वो हम एंड में वो भी आंसर करेंगे। सो प्लीज yes डू नॉट हेजिटेट, फील फ्री to टू पुट ask. योर क्वेश्चंस एंड गिव योर रिएक्शंस आल्सो, क्योंकि बहुत रुचिकर बात हो रही है खाने पीने की, जो कि सबके जाता तो पेट में है, लेकिन टॉपिक बड़े हार्ट के पास रहने वाला है। सही बात है, सही बात है. So these are people who love to have many varieties in their plate. हम्म। ये ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं, मुझे सिर्फ सब्जी और रोटी नहीं चाहिए, उसके साथ बाकी के भी पदार्थ, जिसे हम बोलते हैं कि एक तो इन मराठी वी से तोंडी लावणं, इन द सेंस कि जिसे रुचि आ जाए. रुचिकर, ये लोग भी बहुत रुचिकर होते हैं, ये बहुत कलरफुल लोग होते हैं, इनको कलर्स बहुत पसंद है. ओके। Similarly, they want a palette also filled with different colors, right? So yes, I'm getting a very nice comment that 100% right in my case. Absolutely true. So all of these are the characteristics of Vata कि salty पसंद है, sour पसंद है और मधुर पसंद है. So whenever, if I'm going to apply it in day-to-day life, in females' life, whenever you are approaching your menses, दैट इज व्हेन अ फीमेल विल फील मुझे पानी पूरी खानी है या फिर मुझे समोसा खाना है यार, पकोड़ा खाना है जाके, बिकॉज द वाता, जैसे हम अभी बोल रहे थे कि वाता इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग, बंद करना या फिर कुछ चालू करना, बंद करना चालू करना, राइट? सो दैट इज वाई अभी पीरियड्स आने वाले पर वो चालू नहीं हो रहे, तो यू ईट दिस सॉल्टी स्वीट एंड सावर टेस्ट एंड सडनली वो चालू हो जाता है एंड द पीरियड्स फ्लो इज गुड. सिमिलरली in a male also, he feels stuck somewhere, he wants to go and have something little bit sour, a little bit या फिर नमकीन खाना है, तो he feels a little fresh कि नहीं आना, okay, I'm feeling a little better, या फिर थोड़ा सा स्वीट खा ले. So these are where your body will give you signals and you should listen to it. मैं ऐसे नहीं बोल रही कि पानी पूरी खाओ जाके, but if you can make that pani puri at home with good moong dal, then definitely it's going to satisfy your palate. Yes, chincha यानी कि हम बोलते हैं इमली, it's very good for vata. It's going to curb your vata desires. So if you can make it at home and have, fantastically have it. तो ये इंटरेस्टिंग है। और मुझे लग रहा है बहुत से लोग इसमें जैसे ही रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो लग रहा है कि और भी इंटरेस्ट सबका बढ़ रहा है। और जब आपके पास ये लोग कोई ना कोई मुंबई पहुंचे और आपके पास आए, तो आप इनको और अच्छे से इनको गाइड भी कर सकते हैं, आई एम श्योर, अबाउट Definitely. व्हाट काइंड ऑफ फूड दे शुड हैव जी. एज अ प्रकृति, एंड व्हाट दे शुड नॉट हैव। समय हमारे पास बहुत कम है और जी. काम हमारे पास बहुत पड़ा है, बहुत से जी. प्रश्न और आने वाले हैं। जी. तो दो प्रश्न हैं। हम्म. अगर जो खाना पीना है वात प्रकृति वालों को पसंद आता है, तो वो हम्म. खाते हैं। तो इसके हम्म. साथ साथ दो स्थितियां और हैं। पहली बात हम्म. ये कि क्या कुछ ऐसा खाना पीना है जो वात को बढ़ा भी सकता है, और क्या कुछ ऐसा खाना पीना है जो वात को कम भी कर सकता है। तो उसके जी, बारे में yes. आप क्या कहेंगे? Definitely, we'll go on to the slide. I've made a few pointers of कि कौन सा खाना वात प्रकृति के लिए ज्यादा अच्छा है और कौन सा कम खाना चाहिए. आई थिंक आपको सब खाना चाहिए, सिर्फ इन प्रपोर्शन. प्रपोर्शनेट ईटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी आप नमकीन मत खाओ, बट आई वुड डेफिनेटली से दैट ईट इन प्रपोर्शन. तो जो वात बॉडी टाइप है उनको ज्यादा पसंद है ऑयली, क्रिस्पी, हॉट फूड, सावर एंड सॉल्टी, राइट? बट ये ही टेस्ट, स्वीट, सावर एंड सॉल्टी, विल इंक्रीज देयर वाता.
पर आपको जब ये पता चलेगा यार मेरा वात बढ़ गया है, कैसे पता चलेगा? थोड़ी एंजाइटी होगी, या फिर थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी होगी, या फिर नींद अच्छे से बहुत अच्छे से नहीं आएगी, या फिर गुड़गुड़ होगा पेट में, कॉन्स्टिपेशन काइंड ऑफ होगा। तो हमें ये सटल, फर्स्ट यू हैव टू ट्यून इन, दे आर वेरी इंट्यूटिव पीपल, सो दे कैन ट्यून इन टू देयर बॉडीज एंड माइंड एंड थिंक कि कल मैंने अभी ये अनाप शनाप खा लिया है, अभी मुझे क्या आगे खाना है। तो द अदर टेस्ट दैट ब्रिंग डाउन वाटर इज कषाय, यानी आंवला का जो टेस्ट होता है वो। सो आंवला इज अ वेरी गुड, वन ऑफ द बेसिक एंड वेरी गुड थिंग टू ईट फॉर एनी वाटर काइंड ऑफ पर्सन, टाइप ऑफ पर्सन। आप आंवला भिगो के रख सकते हो, देयर आर मेनी मेनी प्रिपरेशंस ऑफ आंवला, यू कैन हैव दोज। एंड नेक्स्ट इज पंजेंट एंड, तो थोड़ा बोलते बिटर टेस्ट, जैसे कि कड़वा, करेला, that and all is going to bring that vata into balance. And and also pungent. So when you know your vata is decreased, you can have these tastes. When it is increased, you can have the other taste. So it is like, so you have to play with the combination. बहुत spicy खाओगे तो vata shoot up हो जाएगा, but अगर आप you have to spice, has to be always complemented with something sweet. हम्म। Similarly, sour has to be complemented with something, astringent, and salty with something bitter. So there has to be a good combination of these. सो Okay, ये ताकि तो आप, बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी डॉक्टर देविका, क्योंकि अगर हम थोड़े से अपने पिछले कुछ दशक पहले जाएं, फ्यू डेकेड्स बैक, और हम देखते थे कि हमारे पूर्वज लोग एक पूरी थाली में इकट्ठा खाना डाल के खाते थे। उसमें कुछ ना कुछ मीठा भी होता था, कुछ पंजन भी होता था, अलग अलग स्वाद होते थे, नमकीन भी होता था, सब कुछ वो लेकर इकट्ठे खाते थे। जी, तो इज दैट समवेयर द रीजन फॉर बेटर हेल्थ एंड फिटनेस दैट दे? यस डेफिनेटली, यस डेफिनेटली। हमारे जो पूर्वज होते थे वो इतने, दे वेर सो इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट बीइंग्स, वेरी इंट्यूटिव एंड वेरी इंटेलिजेंट, एंड दे न्यू, उनको शास्त्र का उन्होंने अभ्यास किया था, और वो आचरण में भी लाते थे। जैसे कि एक बात होती है नॉलेज होना, और दूसरी बात होती है उसको हम्म। इम्प्लीमेंट करके यूज करना। हम्म। तो हमको आजकल हो रहा है ऐसे कि हमें नॉलेज है पर इम्प्लीमेंट नहीं करते, हम यूज नहीं करते। पर हाँ। वो लोग यूज भी करते थे। इसीलिए एक प्लेट में लेफ्ट से लेके राइट तक, देर यूज टू बी अ टिपिकल प्लेस फॉर द, मुझे अभी भी याद है नाना जी और मेरे घर में आज अभी भी ये रिवाज पाला जाता है कि कुछ भी कहीं भी नहीं डाल सकते आप प्लेट में। प्लेट में वाह। लेफ्ट से लेके राइट तक, यू नो आपको वैसे ही चीजें लानी है। 6 डिफरेंट टेस्ट नीड टू बी प्लेस्ड, 6 5 4 3 2 एंड 1, हम्म। दैट वे इट नीड्स टू बी प्लेस्ड, सो दैट यू विल हैव, आपको सभी का आनंद ले सको और आपको सभी के रस डेवलप हो सके, ताकि ऑल थ्री दोषास आर गोइंग टू बी बैलेंस्ड। ओके। So there are few slides related Yeah. to the same you had Yes, yes. And I think shared. some of the other vata, वात बढ़ने के कारण से या फिर imbalance vata will cause chapped lips, sometimes dryness of your fingers, Okay. या फिर soles, या फिर अपने heels में cracked heels, colon or gut issues like constipation, या फिर menstrual crampings हो जाती है। These Okay. are some issues where your vata is imbalanced, and that is how you need to take care of those issues by balancing the vata. Okay. Other things, जैसे कि आपने mention किया अभी, yeah. So this is a great slide where a few pointers about what fruits, vegetables, grains, dairy, nuts, and spices you can use in order to balance your vata. तो अगर वात विकार है तो definitely can go with these all. You can take a photo if you want, because this will give you a general guideline. It's a general guideline. Again, people with diabetes, hypertension, any other chronic disorders need to talk to an Ayurvedic vaidya और उनसे सलाह ले कि मेरे लिए इसमें से क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है। But these are basic guidelines कि any sweet fruits are going to benefit vata more, any vegetables which are wholesome and have a little bit of starch but colorful vegetables are going to help balance your Mhm. vata. Grains which are more grounding, जिसमें earth और water के element ज्यादा है, जैसे कि brown rice या फिर basmati kind of rice, is going to balance your vata. In dairy, ghee is very good, butter and buttermilk, जो कि ये ड्राइनेस जो है वात की से जो आती है, उस ड्राइनेस को कर्व करके कंट्रोल करे। नेचुरल ऑयल्स टू योर बॉडी दे, गट के लिए भी ऑयल्स दे, योर नर्वस सिस्टम के लिए ऑयल्स दे, और आपके स्किन के लिए ऑयल्स दे।
और फिर nuts, almonds like cashews, walnuts, they have their own basic oils. So those are good omega-3 fatty acids. They are very good for the nervous system and your skin. एंड देन द फेनल, कोरिएंडर, जैसे कि हम बड़ी सौंफ बोलते हैं या फिर अदरक बोलते हैं, जीरा और धनिया, ये बहुत अच्छे होने वाले हैं फॉर वात बॉडी टाइप्स। इसका अगर आप चाय भी करके लो या फिर ये ज्यादा अगर आप खाने में यूज करो तो आपके गैसेस या फिर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, उससे राहत पा सकते हो। ग्रेट, वंडरफुल। सो ये तो हुई खाने पीने की बात है कि क्या क्या बैलेंस करने के लिए अच्छा होता है। तो हम्म, थोड़ा सा आप फिजिकल एक्टिविटीज एंड ऑल रिलेटेड थिंग्स के बारे में भी थोड़ा सा बताएं कि जी अगर बैलेंस करना है वाता को तो किस तरीके की दिनचर्या रखनी चाहिए। perfect. Vata body type needs to will always have lesser sleep as compared to other body types, right? हम्म। तो जो जल्दी सो के जल्दी उठ सकते हैं इस वाता बॉडी टाइप, उनको सुबह हम्म। उठने में कोई दिक्कत नहीं होती। ओके हम्म। तो उनको सुबह उठना भी चाहिए, पर रात को लेट सोना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर बहुत रात को लेट सोए वो तो उनका वात शूट अप हो जाता है, फिर हेडेक्स हो जाते हैं, साइनसाइटिस हो जाता है, ओके। इम्बैलेंस इश्यूज हो जाते हैं, हाइपरटेंशन भी उस कारण से आ सकता है ओके। वात बॉडी टाइप में, वात की वजह से। तो ओके। आपको उठने के बाद यू हैव टू स्टार्ट विथ एक्सरसाइजेस विच आर मोर ऑफ अपलिफ्टिंग, अ पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट जिससे ज्यादा हो। And so you can do some cardio, you can do some weight training या फिर yogasanas with good breathing patterns. But still, instead of going with Bhasrika, where the breathing pattern is fast, Vata body type need to go with Nadi Shuddhi या फिर अनुलोम विलोम या फिर belly breathing more. Because anyways their body is made to work fast. They have fast breathing patterns. Yeah. So वंडरफुल। to control that, you do with Nadi Shuddhi and other slowing down exercises for 20 to 30 minutes. And again, in the evening times, they should go with something which is more calming. जैसे कि meditative practice at evening और प्राणायाम breathing practice या फिर tai chi practices जो है अभी आप देख रहे हो, you should go with more of calming and slow down exercises for Vata, because anyways their body is not putting on more weight. Also their mind is working very fast, so aging Vata body types का mental aging ज्यादा होता है than physical aging. So to bring that into balance, these kind of exercises should be done, again like I mentioned before, 2 or 3 times a week only, not more than that. Because if you see ye Vata body types, even if they have a 9 to 5 ka job, if they have, they will be the ones who are going doing the printing, doing the taking the meetings, standing up, going running the errands, because they can't keep जिसको still. हम आज की जीवन शैली के सबसे मल्टीटास्किंग की बात करते हैं। Yes, हम्म। yes, yes, multitasking. So they are great multitaskers. तो anyways उनकी exercise वहाँ हो रही है. So that is why going with 20 or 30 minutes of stretching is very good. Again, वाता body types को stretching बहुत important है, क्योंकि ओके। अंदर से dry होते हैं वो, तो उनको frozen shoulder, arthritis, ऐसी चीजें बहुत जल्दी grip होने लग जाती है. So to prevent that, doing isometric isotoning exercises of the muscles, एट द सेम टाइम स्ट्रेचिंग पे ज्यादा फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट फ्रॉम अर्ली स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ। Wonderful, excellent. This is so exciting, and it can become almost another topic of discussion as to ट्रू। what kind of physical activity is appropriate for which kind of uh, प्रकृति। बॉडी तो टाइप्स ये या बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है। आगे एक प्रश्न है। प्रकृति की तो हमने बहुत बात की, थोड़ी सी विकृति पे रोशनी डालते हैं। अगर हम कहते हैं कि बैलेंसिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो क्या हम विकृति की बात कर रहे हैं कि इसको जी बैलेंस करना है? और जी जब हम कहते हैं कि आपने किसी को बताया कि आपकी प्रकृति तो ये है और आप साथ में बता रहे हैं कि लेकिन आपका ये पित्ता बिगड़ा हुआ है या आपका जी कफा बढ़ा हुआ है, जब आप ये बताते हैं तो आप क्या उनकी विकृति बता रहे हैं और उसका क्या प्रभाव पड़ता है शरीर पे? हाँ। तो जब आप कंसल्टेशन के लिए आते हो, हम पहले आपकी प्रकृति बताते हैं, ताकि हम्म। हम याद दिलाते हैं आप पहले से कैसे हो। हम्म। हम्म। पहले से आपका मूल स्वभाव कैसे है, आपकी बॉडी का यूजुअल फंक्शनिंग या फिर रिस्पॉन्सेज कैसे है। हम्म। और हालांकि जो कंसर्न्स है वो हमारी विकृति है, जिससे हम बोलते हैं डिविएशन, क्या हम्म। प्राकृतिक स्वभाव से डिविएट होके विकृत विकृति जो आई है वो आप में बैठ गई है।
तो ये विकृति से प्रकृति तक जाने का जो जर्नी है, हम्म। इस जर्नी को हम आयुर्वेदिक टर्म्स में चिकित्सा पद्धति बोलते हैं, जो हम आपको इलेबोरेट करके बताते हैं कि आपको कौन सा आहार, कौन सा विहार, कौन सी औषध और कौन से पंचकर्म लेके आपको विकृति से प्रकृति तक आना है। ये होता है टेम्पररी, ऐसी कोई आयुर्वेदिक औषधि नहीं है जो हम बोलते हैं आप चलो आप जिंदगी भर ये ले लो। रादर आई वुड से अगर कोई औषधि ऐसे हो तो दैट इज डेफिनेटली नॉट गोइंग टू हेल्प यू, क्योंकि विकृति तो बदलती रहेगी, प्रकृति तो सेम रहेगी। हम्म। हम्म। तो आपको 6 to 8 months या फिर 1 साल या 2 साल जितना वक्त लगता है, या फिर 1 महीना, 4 हफ्ते, जो भी हो, आपको विकृति से प्रकृति आने में जितना समय लगता है उतना आपको देना चाहिए, उतना समझना चाहिए और वो आपको करना चाहिए। सो वेन एवर आयुर्वेदिक physician is explaining you things, it is only for a stimulated particular type time of the time, and then only to bring you back to prakriti. हम्म। Okay. तो जैसे आपने कहा कि मौसम का भी प्रभाव पड़ता है, हम्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही मौसम बदले तो वापस वैद्य के पास जाओ और देखो कि क्या प्लस माइनस हो रहा है, इस तरीके से चलना चाहिए, या सिर्फ जो चिकित्सा पद्धति है सिर्फ उसके हिसाब हाँ से चलना चाहिए? जी नहीं, तो कैसे होता है, दो टाइप ऑफ चिकित्सा होती है आयुर्वेद में। एक तो हम्म। शमन, यानी हम पैसिफाई करते हैं, और हम्म। एक तो शोधना, जिसे हम बोलते हैं कि अरे पैसिफाई कर करके, जैसे कि फॉर एग्जांपल एसिडिटी लो आप, या फिर कॉन्स्टिपेशन लेते हैं, क्योंकि हम्म। दिस इज अ वात बॉडी टाइप। सो जिनको हार्ड हम्म। स्टूल्स होते हैं, हम्म। कॉन्स्टिपेशन है, हफ्ते में 2-3 बार ही जाते हैं, या फिर रोज नहीं जाना होता, जाते हैं तो बहुत लंबी समय तक वॉशरूम में बैठना पड़ता है for completely evacuation. So now in that body types, if we are able to control giving pacifying herbs, कि चलो ये छोटे छोटे आहार विहार औषध और पंचकर्म करके आपका सुलझने वाला है, हम्म। तो they respond very well in any season. Okay, because their concern is more important than the season, या फिर is more urgent than the season. ओके okay? पर अगर आप देखोगे कि नहीं ये अभी तो इट्स ओके राइट नाउ, पर फिर से आ रहा है 3 महीने में, फिर से आ रहा है 3 महीने में, तो हमें वैद्य को पता चलता है कि नहीं इसको शोधन की जरूरत है। तो फिर हम इंटरनल डिटॉक्सिफिकेशन देते हैं, वो भी सीजन के हिसाब से। तो मैं तो बहुत बार पेशेंट को बोलती हूँ अभी मत आओ आप, बारिश के टाइम पे मेरे पास आ जाओ, अच्छा। ताकि तभी हम शोधन कर पाएंगे, क्योंकि ओके। नैसर्गिक रीत्या निसर्ग भी आपको साथ देगा। हम्म। तो इसीलिए तभी हम शोधन करते हैं, विच इज वंस अ ईयर। इफ योर कंसर्न इज रिपीटिंग एवरी ईयर या फिर एवरी सीजन, या फिर इट्स ऑन अ रिपीट मोड, देन यू शुड गो विद शोधन चिकित्सा। तो आजकल जैसे बहुत पॉपुलैरिटी हुई है, आप खुद एक आयुर्वेदिक क्लिनिक चला रहे हैं, यू आर योरसेल्फ अ पंचकर्मा एक्सपर्ट। तो एक तरफ तो है कि हम वैद्य के पास जाते हैं, वो सिर्फ औषधि देते हैं, मेडिसिन देते हैं और बोलते हैं कि ये आप लो जाओ। और कई बार जैसे आपने डिटॉक्स की बात की, आपने हम्म। थेरेपीज की बात की, तो कई बार वो थेरेपी साथ में चल रही होती है। हम्म। अप्रोच क्या है, सही क्या है? जी सही तो चिकित्सा चतुष्पाद बोलते हैं आयुर्वेद में। चिकित्सा हम्म। चतुष्पाद, अगर आप चार पहिए के स्टूल पे हो तो आपको स्टेबिलिटी ज्यादा मिलती है, हम्म। ऐसे बोलते हैं। सो सिमिलरली चिकित्सा चतुष्पाद यानी क्या, कि हम्म। आपको एक तो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है आपको सही डॉक्टर मिलना। ओके, सही डॉक्टर के मिलने के बाद सही प्रक्रिया करने के लिए सही पंचकर्मा अगर कर रहे हो, तो हम्म। वो नर्स असिस्टेंट या फिर असिस्टेंट डॉक्टर या फिर मसाज थेरेपिस्ट, जो भी हो थेरेपिस्ट सही मिलना। ओके। हम्म। थर्ड ओके। थिंग इज औषधि सही मात्रा में, सही टाइम पे, सही डोसेज में, और हम्म। अच्छी औषधि मिलना जो कि प्योर फॉर्म में है आयुर्वेदिक। हम्म। और चौथा, जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता, सही अच्छा पेशेंट बनना। यू नो यू नो वो बहुत कम दिखता है, कि ऐसे होता है कि कभी कभी इम्पेशंस हो जाता है कि नहीं हम्म। नहीं मुझे विद इन अ मंथ आप ठीक करा दो। वैसे नहीं होता, इट डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी हाउ मेनी व्हाट काइंड ऑफ एलिमेंट यू आर सफरिंग फ्रॉम सिंस हाउ लॉन्ग, उस पर डिपेंड होता है। आप अगर गाइडलाइंस अच्छे से फॉलो करो आपको क्विक रिजल्ट मिल जाता है, अगर हम्म। नहीं फॉलो करो तो आपको बहुत क्विक रिजल्ट नहीं मिलता। ओके। तो सही बात ये चारों पे डिपेंड होती है। हम्म। आई हैव मेनी ऑफ माय पेशेंट्स दैट आई हैव सीन पोस्ट कोविड रादर, वो आर वेरी वेल अवेयर, और यंग पीपल उसमें ज्यादा है, समवेयर बिटवीन हम्म। 20s to 50s के बीच में।
देयर हम्म। इज अ राइज इन पीपल कमिंग फॉर वेलनेस थेरेपीज। मुझे कुछ नहीं हुआ है, ये बोल के क्लिनिक में आना इटसेल्फ आई से एक्सीलेंट, वी वांट मोर पीपल लाइक यू, जो आयुर्वेद का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, कि जो वेलनेस रखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। दे जस्ट गो विथ 1 7 to 15 days ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन अ ईयर, ओके। दैट्स इट। दे डोंट नीड एनीथिंग एल्स। बट उनकी प्रकृति तो आप जानते होंगे या जानने की कोशिश करते होंगे, उस हिसाब से थेरेपी बताई जाती है या या कोई प्रकृति भी के थेरेपी हिसाब दी से, जा जी, सकती है? सॉरी फॉर दिस, या प्रकृति के हिसाब से ही थेरेपी बताई जाती है। हाँ। अगर प्रकृति आपकी वात की है, देन यू विल बी गिवन मोर बस्तीज एंड शिरोधारास। एंड ओके। अगर पित्त की है तो विरेचन जैसी थेरेपीज बताई जाती है, जो कि सिर्फ वही सीजन्स में अवेलेबल होती है। एंड कफ डोमिनेटिंग प्रकृति हो तो वमन, बस्ती, अदर टाइप्स ऑफ बस्ती, ये बताई जाती है। सो तो वो जो प्रकृति आपके के हिसाब से। प्रकृतिवाद प्रकृति वाले जो आपके पेशेंट्स हैं, वो जनरली आप उनको किन थेरेपीज में ज्यादा करते हो? और क्या जो जिस तरीके के ऑयल्स बताए जाते हैं कि हाँ जिससे उनको थेरेपी दी जाती है, क्या वो भी प्रकृति पे निर्भर करता है या विकृति पे? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। Oils are never similar for all the three types of prakritis. ओके। But oils can be similar if you are going for wellness, not ओके। illness. ओके। या फिर maintaining prakriti, you can have the same oil. Okay. हम्म। इसका मतलब ये कि यू कैन हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रकृति कमिंग इन। जैसे कि अभी लेट अस टॉक अबाउट वात प्रकृति, तो वात के लिए सबसे अच्छा है टेकिंग रेगुलर अभ्यंगम, हेड टू टो मसाज, mainly putting oil on your head, the crown of your head. Second thing is putting oil on the in the ears, and third thing is on the feet. So going with a full body स्नेहन जिसे बोलते हैं, स्वेदन जिसे बोलते हैं, स्वेदन यानी फर्मेंटेशन, यानी फुल बॉडी पेटी स्टीम होती है वो। एंड गोइंग विद बस्ती या फिर ऑयल एनिमा थेरेपीज, इट कैन बी ऑयल एंड डिकॉक्शन मिक्स्ड डिपेंडिंग ऑन द condition, as the physician will always advise you. So the best therapies to go for is abhyanga oil massage, शिरोधारा, that is third oil stream on your forehead, left to right rhythmic pattern में जाती है। It brings down your central nervous system and your hormones to the optimum level, basic level पे आ जाते हैं। पादाभ्यंग, क्योंकि जैसे मैंने कहा वात का लोकेशन ही है बिलो अम्बिलिकस, सो पादाभ्यंग यानी टेकिंग केयर ऑफ योर फीट एंड द सर्कुलेशन विच इज एक्चुअली रनिंग ऑन योर लोअर लिम्स। नीचे इजीली जाता है सर्कुलेशन, ऊपर लाना पड़ता है। सो पादाभ्यंग जैसे ट्रीटमेंट्स है दैट वर्क ऑन द सर्कुलेशन सिस्टम ऑन योर लेग्स। नस्यम यानी एराइन थेरेपी, जैसे कि नेजल ड्रॉप्स होते हैं टू क्लेंज योर साइनसेस, टू गिव नरिशमेंट टू योर आईज, ईयर्स, नोज एंड ऑल द सेंसरी ऑर्गन्स ऑफ योर हेड। एंड लास्ट इज कर्णपूरण, जो हम रेगुलरली करने को बोलते हैं, 3 मंथली करने को बोलते हैं। इट्स अ 7-day therapy. Also, you can carry forward that to maintain at home. So, when you're taking the therapies while going, Ayurvedic physician will always tell you, hey, this is what you need to do at home to maintain things. Yeah. So, those are the basic ओह, therapies. एक्सेलेंट। सो हमारा टारगेट तो था कि हम ये सेशन बहुत जल्दी फिनिश करें, आधे घंटे में सब प्रश्न ले लें, लेकिन ये इतना रुचिकर हो गया कि कैसे समय आगे बढ़ा हमको पता ही नहीं चला। और मैं आपको डॉक्टर देवी का याद दिलाना चाहूंगा जो आपने पिछले सेशन में कहा था, और वो था कि एक स्पेशल हर्बल टी रेसिपी आप देने वाले हैं। जी जी, आपने कहा था यस, कि नेक्स्ट सेशन में मैं बाता स्पेशल थेरेपी रेसिपी दूंगी। रेसिपी दूंगी, यस यस। एंड सो आई एम हियर विद द वाता स्पेशल टी, जो आप यू कैन एंजॉय टुडे इवनिंग इफ यू कैन मेक दैट एंड सी हाउ दैट फील्स। अगर आपका वाता बढ़ा हो तो इट्स अ वेरी इजी रेसिपी। Okay, very easy recipe. The servings are 4 servings. Case, so 4 cup of, so 4 people can enjoy at once, is what I've given you. So when you take 4 cups of water and add the sugar at the end, the cane sugar at the end, जिसे हम सूखा नट बोलते हैं या फिर ब्राउन शुगर बोलते हैं, please add that at the end. First take 1 tablespoon बड़ी सौंफ, जिसमें 1 tablespoon आप धनिया लेना है, और 2 कार्डेमम के यानी इलायची के पॉड्स, उसको ब्रेक करके उसमें डालना है, और बॉयल इट इन द वाटर फॉर 2 minutes, and then you can last add the sugar in it, and then strain it and serve hot. This is one of the easiest vata calming recipes. तो आपको अगर लगता है कि menstrual cramping हो रहा है, या फिर किसी को headache हो रहा है, और frequent headaches है, या फिर जॉइंट एक्स है, लो बैक एक्स है,
या फिर कॉन्स्टिपेशन जैसी तकरार हो रही है ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस, इफ दे हैव 1 cup of this tea every day in the evening times between 5 to 7 o'clock, only evening times only, then you will definitely feel relief in the body symptoms. At the same time, अगर कुछ हो भी नहीं रहा है और आपको पता है आपकी वात प्रकृति है, you want to balance things off, then this is a very easy herbal tea recipe. I also want to tell that all of these learnings that I've gotten are from Dr. Vivek Shanbag, who is an Ayurvedic physician and a naturopathic doctor practicing in the US. So I was there practicing in the US for 5 years with Gayatri Shanbag and Dr. Vivek Shanbag, who are excellent Ayurveda practitioners. और मुझे गुरु करके I have really been blessed by having both of them, teach me a few things, and we have made these recipes. जब हम workshops लेते थे, हम बना के सबको पिलाते थे, of herbal No, tea. wonderful. Dr. Shanbag is wonderful. And we at Crack the Wellness Code had an opportunity to host both of you, the Yes. Guru and the Shishya, at Jaipur last year. And it was really a wonderful experience to listen to Absolutely. Dr. Shanbag. बहुत अच्छा वो हमारे लिए अनुभव रहा। और जी। थैंक यू सो मच। अगर आपको स्क्रीनशॉट किसी ने नहीं लिया तो अभी ले लें। वैसे तो YouTube लाइव पे ये एक्टिव रहेगा, बट इफ Yeah. यू आर टेकिंग अ स्क्रीनशॉट एंड यू वांट टू एंजॉय इट राइट अवे, फील फ्री टू टेक द स्क्रीनशॉट। एंड यस, सो हमने बहुत कुछ जाना, आज बहुत कुछ समझा वाता प्रकृति के बारे में, और किस तरीके से वाता को बैलेंस किया जा सकता है हमने ये भी समझा। इट वॉज रियली वेरी इंटरेस्टिंग डॉक्टर देविका टॉकिंग टू यू ऑन ऑल दीज एस्पेक्ट्स। जब भी आप ये सेशन का हमारा समय आता है तो मेरा एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि मैंने खुद बहुत थेरेपीज ली हैं और एक पेशेंट की नज़र से बहुत सी चीज़ों को मैंने समझा है। और मुझे इतना रुचिकर ये लगा पूरा एरिया, जो हमारा इतना एंशियंट है, जो हमारा सब्जेक्ट, और इतना हीलिंग प्रॉपर्टी जो इसकी इतनी स्ट्रांग है। तो मुझे लगा ये जो थेरेपीज हैं, ये जो आयुर्वेद की पद्धति है, ये जी। इसके जो बेनिफिट्स हैं, लोग एक बार एक्सपीरियंस जरूर जाकर करें एक अच्छे आयुर्वेद डॉक्टर के पास। एंड हु अदर देन यू कुड बी द बेस्ट पर्सन टू गाइड पीपल एंड एक्साइट Great. देम दैट Thank you so आयुर्वेदा much. इज Yeah. Yeah. नॉट जस्ट जो सिर्फ पिक्चर इमेजिन करते हैं वो नहीं है। इफ यू गेट टू मीट डॉक्टर देविका, यू विल recognize and identify she is not anywhere less than any other practicing doctor. She is well capable to give you a great healing experience whenever you visit her. So thank you Thank so you much, so Dr. much. Devika. Thank you so much. मुझे ये बोलना है कि there are many other practitioners also, जैसे कि डॉक्टर राजन पाटनकर वो हमारा अटेंड कर रहे हैं अभी. I have many of the great practitioners who are even attending. So as long as you are consulting a very good Ayurvedic practitioner, you are in safe hands. You can always come to me. That's very nice of Sharad ji to mention this. But I am actually collaborating the ancients and with the modern outlook. कि ऐसे नहीं है कि वो आपको प्रीवियस जनरेशंस को ही प्रैक्टिस करना है, ऐसे नहीं है. रादर इफ वी प्रैक्टिस मोर on in the upcoming generations, then we will have more benefit for our kids or for the next generations. So thank you so much for having me today. I love the responses that I've gotten on this session, and I'm really looking forward to healing everybody who wants to take a plunge in Ayurveda. Thank you. एक प्रश्न है जो हमारा, आई थॉट इट विल बी गुड टू आस्क। हम छोड़ नहीं सकते इस प्रश्न को, बहुत जरूरी है। Okay. हमारा Okay. समय कम है, हम इतने प्रश्न ले नहीं पाएंगे। जी. क्वेश्चन इज, कैन वी हैव 2 or 3 hours लाइव सेशन बाय डॉक्टर देविका देशमुख Oh my इन goodness. मुंबई? शैल बी हेल्पफुल फॉर मोर इंटरेक्शन फॉर बेटर लाइफस्टाइल। Yes, I think CWC can definitely take, if you are in 2, 3 We would lakhs. love to invite you again to Jaipur for a live interaction with our audience. And Mumbai के लिए तो Yes, आप लोग डॉक्टर देविका से संपर्क में आ सकते हैं। In the next session, definitely. we will let you know everything about how you can reach her in Mumbai, Yes. and we'll share a lot about her clinic also, which she has come up Absolutely. recently. So Absolutely, yes. this That is come. such a that is so much of love that you're showering. Thank you so much. We can definitely have an interactive session, live session, जैसे कि आपको चाहिए. We can definitely make that available. In Mumbai or in Jaipur, we can have a talk. We can learn more about. I also do sessions in schools
and buildings and with institutes who want to learn more about Ayurveda. I go to banks to give them sessions. So ऐसे अगर आपको चाहिए हो, Hmm. do let me know and I'm ready to do that. Hmm? Great. Hmm. Wonderful. Hmm. Excellent. Thank you so much, Dr. Devika. It's time now. I request our Managing Director, Wing Commander Vidyakant Kala, he's with us, and request him to give a wonderful vote of thanks to Dr. Devika. थैंक यू सो मच शरद फॉर कंडक्टिंग द सेशन सो वेल। और देविका जी, आपका तो कोई जवाब नहीं है ना, जैसे आप ग्लो कर रहे हो वैसे ही आपके शब्द ग्लो कर रहे थे पूरे। Thank you. इज माय स्क्रीन विजिबल? Yes, you just need to open the slide गो viewer. टू द स्लाइड शो मोड। Yeah, slideshow mode. Yes. हियर वी गो। So thank you so much once again, everyone, for joining in, and of course to Devika ji and Sharad for doing such a wonderful job. Yes, thank you so much. Thank you, Sharad. Thank you, Sharad ji. Thank you, Vidya Kankala ji. Thank you very much. So what did we learn today? There were some key learnings. We learned that Vata governs movement and communication within the body and mind, and also functions like breathing, circulation, digestion, and mental agility. We learned that Vata personalities are dynamic, creative, and spontaneous. On the positive side, on the negative side, they are prone to indecisiveness, insecurity, and anxiety when imbalanced. We also learned that diet and lifestyle play a crucial role in balancing Vata, with suitable foods, adequate rest, and calming routines being essential. We learned that Vata imbalance leads to both physical and mental distress, including joint pain, dry skin, insomnia, anxiety, and digestive issues. We learned that Ayurvedic therapies like Abhyanga, Shirodhara, and Basti, along with mindful exercises and herbal remedies, help restore water equilibrium, which is so critical. We also learned that you need to slow down and be in present to manage Vata imbalance, if any. For more, Dr. Devika is always there to help you out. Sharad will can share her connects. Our next program, again with the same expert, decoding Ayurveda for better living, session 4. We'll talk of Know Your Prakriti. Next time will be Pitta Prakriti, right, Shabhay? Yes, Yes, yes. yes, yes. Pitta Prakriti. So we'll learn about Vata Prakriti this time. Next time we'll learn about Pitta Prakriti. Mhm. It'll be 23rd of March, time 11 a.m. Speaker you have seen for yourself. Who better than Dr. Devika? We also have a few book recommendations, which have been done by our strategic advisor, Dr. Sanjay Runwal. It redefines retirement as an opportunity for growth, fulfillment, and purpose, guided by the systematic blowout plan. He brings out concepts like do not just retire, but retire, rewire, and refire. So go ahead and order this book. It's there on Amazon. Then we also have another book from our another advisor who is also there, I think, with us today. Vikram Rastogi sir. Secrets of Happy, Healthy, Long Life. As the name suggests, the book unveils secrets of happy, healthy, and long life with focus on physical, mental, and spiritual health. It talks about importance and impact of yoga, laughter yoga, talks about relevance of mantras, talks about impact of food, talks about use of traditional methods for improving immunity. It's quite useful to one and all. So go ahead and read this book. We are located in Jaipur on Rajbhavan Marg, and we are looking for volunteers, who are interested in wellness, who want to work with team members in India and US. We have presence in India as also in US. You want to contribute to societal welfare, and also you want to share your wellness story. So we also bring health heroes on our platform, people who have reversed certain lifestyle disorders, to share their story and encourage others also to do the same. We thank our strategic knowledge partners, IHMR, IS, and community partners, JCF, MFJCF, and Jewelers Association of India.
Thanks our advisors, Agarwal Saab, Kamal Shettiya ji, Vikram Karnawat ji, and Vikram Rastogi sir. Our, medical doctors who help us day in and day out. Then our some more people who help us out. We are thankful to all of them. Thankful to our ambassadors, Mahar Pratap Sharma ji and Neeta Buchra ji. This is our team, Mr. Naren Bakshi, who is the fountainhead of what we are doing today. Myself in Commander Kala, then we have Vijay Maharaji, Dr. Sanjay Runwal, and then the whole team who worked so much hard to bring this kind of programs for you. Jitendra Gautamji, you have just heard Sharat, Dr. Gargi Gopesh, we have Umardin, we have Masuan Parikji, and we have Mohammad Ajaruddinji. Thanks so much, team, for all your hard work. So far, we used to hear we are what we eat, but going forward, new mantra that we need to remember is we are what we eat, what we metabolize, what we absorb, and then what we detox. Hope Dr. Devika would agree with that. Absolutely, yes. Absolutely, yes. Sir. Perfectly said. So we are also present on YouTube. We are there on Facebook, Instagram, and LinkedIn. Please do follow us and take benefit out of the information that is available there and help support us. Once again, topic next week, Decoding Ayurveda for Better Living. We are talking of Pitta session, 9th March, 11 a.m. Speaker, our very own Dr. Devika Deshmukh. 23rd March, sir. Yes, 23rd March. Sorry, I stand corrected, 23rd March. No problem. My apologies for it. So on behalf of MacRec, the Wellness Code Foundation, and my team, I thank you all so much for joining in. And thanks once again, Dr. Devika ji, for taking such a wonderful session and enlightening all of us. Thank you all. Have a great day.